Assalamu alaikum friends and welcome to Knowledge TV KTV. Today we have a new topic that is making apology and accepting apologies. For example, when you do some mistakes and you want to apologize, how you will say like. So there are 5 different ways to say apology and there are 5 different ways to accept that apologies. Okay, so if you are new to the channel, kindly subscribe the channels and click the bell icon for new videos. Okay, let's take a start from the first one, that how you will say to accept apologies. So the first one is I am extremely sorry. Apology actually क्या है? apology का मतलब है माफी मांगना. तो हमारे पास 5 different way English में to say apology or apologize for a person. The first one is I am extremely sorry. ठीक है, मैं माजरत आपसे माना चाहता हूँ. ठीक है, when you do some mistake you can say like this, I am extremely sorry. The second way is pardon me, माफ कीजिए. ठीक है, this is the second way to say. And the third one is please accept my apologies. Please मेहरबानी करके मेरी माजरत को कबूल करें. So this is the third way. These are the 5 different apologies way of to say apologies person. माफी मांगने, इंग्लिश में माफी मांगने की 5 डिफरेंट तरीके हैं. तो let's come to the fourth one, I beg your pardon. ठीक है, I beg your pardon, मैं आपसे माफी मांगना चाहता हूँ. ठीक है, I am really sorry. ठीक है, I am really मतलब एक्चुअली उर्दू में भी लोग सॉरी कहते हैं, तो इसकी मतलब सिर्फ माफ करना है. ठीक है, so these are the 5 different way of to say or making apologies. For example, when you do mistakes in a person's, you will say like this, but if another person do such mistakes, okay, and he says like this, how you will reply. So you will reply like this, okay, don't mention. okay, इसकी मतलब मेंशन उसको ही बयान करने की ज़रूरत नहीं है. ठीक है, डोंट मेंशन. फॉर एग्जांपल ए पर्सन डू मिस्टेक. ठीक है, एक पर्सन से गलती हो गई. ठीक है, और फिर वो आ गई कि आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, ये बोला. ठीक है, तो आप किस तरह रिप्लाई करेंगे? यू विल रिप्लाई लाइक डोंट मेंशन. ठीक है, आप बयान ना करें. ठीक है, बस सॉरी माफ कर दिया. The second way is no problem, leave it. No problem, leave it. ठीक है, this is the second way to reply an apology for a person. No problem, leave it का मतलब क्या है? कोई मसला नहीं, छोड़ दे. ठीक है, not at all. ठीक है, एक अदर पर्सन से गलती हो गई थी और फिर आपसे बोला please accept my apologies. तो you can reply, if you want to pardon him, you will say not at all. Okay, no need to apologize. No need to apologize, माफी की कोई जरूरत नहीं है. ठीक है, you will reply like that. Forget, भूल जाओ, forget it. तो दाशी हमने 5 different तरीके माफी मांगा, माफी इस्तलो सॉरी. ठीक है, पश्तो के दाता ट्रांसलेट कोम. ठीक है, फॉर एग्जांपल तासो न गलती वशवाला तासो बची कमने सकवाई बिया पर इंग्लिश के बतासो संगे कस्तावाय. फॉर एग्जांपल बारमन कोन की ऐसे या पलमन की ऐसे वाल तो अंग्रेजानी ज्यादातर या इंग्लिश लैंग्वेज के कमने पटोल दुनिया के लगे पर मकते तासो कम्युनिकेशन ज्यादातर इंग्लिश लैंग्वेज की. यू विल से आई एम एक्सट्रीमली